Hello students, now we will discuss about the potential energy. Since we have discussed about the kinetic energy earlier and now we are going to discuss about the potential energy. So what is potential energy? The energy which is possessed by an object for changing its position is called potential energy. इसको हम समझ भी सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से. Like if we are having a rubber band like this. So students, initially we are having a rubber band. I have hold it from one hand and now I am going to pull it from the other hand. So while we see that the rubber band will stretch, and if it because I am going to apply force on the rubber band due to which it got stretched, and when we release the force, then it will regain its original position. So actually जैसे ही हमने उसे देखा वो स्ट्रेच करता है, so that means the rubber band has acquired some energy due to which it is going to change its shape. Okay. Similarly, we can take a slinky or a spring, we can stretch it. We are having a toy car and by using the key we will see if we मतलब अगर हम चाबी भरेंगे टॉय कार में and then we will place the car on the ground, तो कार है वो move करेगी. So from where the car has acquired energy? So students, actually whatever we are going to do work on the object, that work is stored in the object in the form of energy. तो जो भी हम क्या है ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे हम टॉय कार के लिए चाबी भर रहे हैं, जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग के ड्यूरिंग जो भी वर्क डन होता है वो इन ऑब्जेक्ट्स में स्टोर हो जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड देन दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, एक्चुअली दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Okay, and this potential energy is not used to change the velocity or speed of the object. Okay, this energy is not actually responsible if the object is in motion. So that means on stretching the rubber band, we are transferring the energy to the rubber band in the form of potential energy. While winding the key of toy car also, we are just giving energy to the toy car in the form of potential energy. Even the energy if spring is there, then inside a spring also if we are doing the work, then we are storing the energy in the form of work, in the form of potential energy. Okay, so what is potential energy? Potential energy is such type of energy which is possessed by an object by virtue of its position of configuration. So energy, we can say energy possessed by an object due to change in its पोजीशन. ओके, अब पोजीशन चेंज होने की वजह से जो भी एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के पास, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे पास में एक ये है सरफेस की बात करें तो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे रखी हुई है. अगर इस पे फोर्स अप्लाई किया, हमने इसको किक किया या धक्का मारा, तो ये ऑब्जेक्ट है ये खिसक के यहाँ चली गई, तो इसकी पोजीशन है चेंज हो गई. जो हमने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से इसने वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये आ गया. और ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेस हो गई, तो डिस्प्लेस हुई है मीन्स पोजीशन चेंज हुई है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी. इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं या फिर इसे खींच के किसी पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाया जाए, तो भी पोजीशन इसकी चेंज हो रही है. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज, इफ वी आर पुलिंग इट, अगर हम इसे किसी धागे से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई,
So that means we are applying force, it is showing displacement, work is done by the object, and this work is stored in the form of potential energy. So this is the पोटेंशियल एनर्जी. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कभी भी चेंज होती है तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि पोजीशन चेंज होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और वर्क डन वो ही ऑब्जेक्ट के पास प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एक बार और इजी लैंग्वेज में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो जाती, इनिशियल से वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है, कोई डिस्टेंस कवर करता है, कोई हाइट कवर करता है, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मूवमेंट के ड्यूरिंग जो एनर्जी होगी, मोशन कर रही है, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, द पोटेंशियल एनर्जी, I am just representing the potential energy by PE. It is equals to mgh. ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है. यूनिट जो होती है पोटेंशियल एनर्जी की वही होती है जूल. ओके, लाइक द काइनेटिक एनर्जी, इट्स यूनिट इज ऑल्सो जूल. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी अबाउट द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Derivation of potential energy. What is derivation? Derivation means how this formula come. So how we can get the formula of potential energy. So students, to derive the expression, what we will do, actually you know very well that if an object is raised to certain height, then its potential energy will increase. Okay, why? Because continuously its position is going to change. So at a distance h, its potential energy will increase. Okay, because work is done on the object against the gravity while it is being raised by applying force. That's why the energy present when it is raised to height h against gravity, that energy is called gravitation potential energy. तो height पे ले जाने पे वाली potential energy को हम gravitational potential energy भी कह सकते हैं, simple potential energy, no problem. ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपन कि कैसे. मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m. ये ज़मीन पे रखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट इज on the ground. ठीक है, this is the ground. Now the force is applied on the object and तो इस ऑब्जेक्ट पे सपोज हम किसी धागे से या किसी भी हेल्प से इसको फेंक रहे हैं, या धागे से वी आर थ्रोइंग इट और वी आर जस्ट पुलिंग इट बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग. सो बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू सम हाइट h. इस ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m, इट इज रेज्ड टू द हाइट h. इसको हम h हाइट तक ले गए. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट? सिंस फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट वी नो it will be equals to mg. Why? Because force is equal to mass into acceleration. That we know, that we have learned in chapter motion, that force is equals to mass into acceleration according to the Newton's second law of motion. Force is equals to mass into acceleration, and if the object is moving due to the gravitational force against the gravitational force, the object is performing acceleration, so we will use over here small g, that is gravitational acceleration. So force is equals to mass into gravity, mg, and also it is covering the height, that is h distance it is going to cover. So we can say that s is equals to h, that is distance covered by it is equals to the height. And since we know that the work done is equals to force into displacement, if we will put the value of force in displacement from this side, then force applied is equals to mg and the distance is equals to height. So work done is equals to mgh, and only this work done is stored in the form of potential energy. That means whole work done is equivalent to energy.
and therefore potential energy is equals to mgh. So students, it is quite easy, very easy derivation. You have to simply use the formula W is equals to force into displacement, and we have to put the values of force in displacement. Okay, so that's why this is the potential energy of the object. Now there is a very important thing that you have to know, that actually the work done by gravity depends on the heights. Okay, the work done do not depend on the path. The work done ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ओनली ऑन द हाइट. अगर आप इस मास को ऐसे ऐसे करके अगर लेके जाओगे तो भी वो जिस हाइट पे डायरेक्ट अर्थ की सरफेस से जितनी हाइट पे वो ही हाइट कंसिडर होगी. वर्क डन है ग्रेविटी के केस में क्या है, डायरेक्ट हाइट है वो कंसिडर होती है. पाथ पे डिपेंड नहीं होता वर्क डन, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे. तो अगर आपके पास में कोई भी मास है, जैसे दो चीज़ें हैं कि आपके पास मास है ये m, और इस मास को आप डायरेक्ट एक h हाइट तक लेके जा रहे हो, ठीक है. और दूसरा केस ये है कि अगर आप ज़मीन से m मास को आप पहले क्या है इधर लेके गए, फिर उसके बाद में आप इधर लेके गए, फिर इधर लेके गए, फिर इधर, ऐसे करते हुए अगर आप यहाँ पे लेके जाते हो तो भी हम क्या है पूरे डिस्टेंस को कवर नहीं करेंगे, बल्कि h हाइट को ही कंसिडर करेंगे. So this path will not be considered. So in case of means when we are considering the gravity moving the object due to gravity or against gravity, in that case we will consider the work done due to the direct distance from the Earth's surface. Okay, that's why the potential energy will also be equal to mgh. H is the direct height of the object. Okay students, so this is all about the potential energy. I hope you understand. If you don't understand, please then you can ask your doubts.